Hi, welcome back to the Python series where we'll be covering the Python basics completely so that you can create your own projects. Today, what we are going to learn is the very basics of functions and recursions. Earlier in the video, we have completed what do we have completed? We have completed this program writing of loops, different types of loops, for loop and while loop, right? So today we'll be covering the functions. Functions and recursions are very important in Python. Let's see what functions and recursions are. Before recursions, we'll be completing functions. So what is function? Let's say you need to write a multiple set of multiple lines of code, okay? And you want to repeat them again and again. So you need not write every code again and again. See, there are two methods of writing anything. Let me tell you, like if you need to wish someone that let's print happy birthday to you. Okay. Uh, you are 18 now. Let's say I'm just saying this, and I need to print this 6 times. Okay. Okay, now I need to print this 6 times. Now I'm sorry, I mean 3 times. Let's take 4 times. If you want to print this 4 times, this set of pair 4 times, then you can do two two different things. Okay, there are multiple approaches, but I'm saying you ways. Okay, one is you can just copy them again and again. See, you want to print this each and every time. S- So this is a long process and this will increase the code, number of lines of code. So it will slower the process and also you cannot remember everything at once. So it might be difficult. So here comes the function part. Here comes the function part. It works this way that you define a function. Okay, you define a function and that function you're going to call. Now suppose I'm defining this function. How you define a function? It's simple. Define, let's take any name of this function. Let's say we are taking function 1, so we will take function 1 and you can define this. Take this whole thing inside the. Okay. Now we have created a function 1. How do you create a function? First, write def, define, which is a short form of define. Then you write any variable name you want to keep of the function name, then parenthesis, and later on you write the whole line of code you want to inside this function. So now this is a function. Now how you are going to call is function 1. What this does, see, if you simply write this thing, and I'll show you and I'll run it once. Wait, I'll run this and show you. Nothing prints out because this is a function. We are not printing it, we are defining a function. Okay, so defining doesn't mean printing, and it doesn't run whatever is written inside until and unless we call it. What is call? Call means we are asking the function to appear here. Like, bhai function tum kaam karo apna. So whatever will be written in this function will be doing its work. Wait, see, take a second. Okay,
Did I miss something? Function for. Okay, okay, sorry. My bad. I just kept this function. See, what very important thing which I usually do mistake and I don't want you guys to do. Whenever you write something inside the Python, just remember that there are white spaces which are very much important. See, if you take this, if you remove this tab space now out of here, then what this will happen is the whole code, this whole thing will come out of the function. So this won't be valid inside the function. To place inside the function, when you see from here, if I click enter, this is the inside function. And if I do backspace, I go out of the function. So this is the thing. Now, since we are calling the function, we need to go outside. See, it prints this. Now, any number of time, if I'm somewhere here in between and I want to call the function, I'll simply write this, and this means that I'm calling the function. Wait, since I've defined it down, see, anywhere between, let it be any code in between, it doesn't matter, it will still call the function, and if the function is already defined, it will do its job. Okay, did I miss? So now what we'll be doing is, since now we have written, now we are going to call the function. Okay, now what we are going to do is, since we have defined the function already, we are going to call the function. How do we call a function? I'll show you it. See, since we have just defined the function, now I'll show you how you can, what you're going to do with this function. Wait, if I simply run this out, this won't give me any output because we are simply defining this function. Wait a second. Okay. We are simply defining this function, and I'll show you that whenever we run this, we are not going to get any of the output because we have just defined the function with this def. Okay. Now this fun_c1 function 1 which we have named, we need to call it. How we are going to call it? Just the function name and this parenthesis. Okay. See this. And remember, whenever you are writing or you are calling this, this should not be inside this function because it will throw an error. Wait. I mean, it won't give anything output. So for that, we need to take this out of the function and then run it. This is simply printing this whole function out. I mean, not printing exactly, but making it run whatever code is written inside. Okay. Now, what you can do else is, let's say, hmm, let's take any arbitrary. This is called arbitrary, okay? Name, comma, age, okay? Let's take name first now. Here, what we'll do is this. You know that F, why we are adding F? Because here instead of you, I want to place this name, okay? So now let it be anything. The same. I'll just a second. And now
inside this, what I want to enter is any random name. Let's take, I'm saying Ayush. Now let's see how it's going to print. See, happy birthday to you, Ayush. If I want to change it here, I can still place this name and then curly brackets. What this F does is inside the inverted commas, we generally see strings, right? String, different kind of letters or words we are adding here, or any number inside the string, inside the double inverted commas, the whole thing becomes string, and we cannot change it. So if you want to add something that you have already defined, or which can be user input, or which can be another different data type, so you can use this F and then curly brackets. See, curly brackets, and then enter whatever you want to enter here. This won't be a string probably, but you can still add strings, anything you want. See, like if I am defining here that a equals to 10 and I want to enter here a. See, this will print this a, but before that I need to add this f here. See, happy birthday to you 10. This doesn't make any sense, but this was one example. Okay. See, now what else we can do? I'm adding one more arbitrary, which can be, let's say, age. Okay. And here instead of 18, I want to it to be a custom, and I want to enter here age. Again, here I want to enter my age. Again, enter age. Again, enter age. To make this line valid, I need to enter F in the starting. F, 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 F. Okay. So now instead of only my name, I can also add the age. Let's say 19. Then one more function call. Again, I'm repeating this, and with another name, let's say Rahul. And let's say he's 18. Then I want to enter one more name, Shreya. And let's say she's 13. Okay. See, this is the benefit of function call. You can customize this on your own way and you need not copy everything. I'll just run this and show you. See, first of all, let me make this. Yeah. Happy birthday to you, Ayush. You're 18 now. Sorry, 19, 19, 19 then. Happy birthday to you, Rahul. Rahul, you are 18 now, 18 now. I need to space. Wait a second. How can you add space in this? Mm, 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 mm. Let's check. I should, I think this thing. No, no. There might be something else. I'll check and tell you once. But see, this is the main concept that you can change the functions and make them work according to you. So this is the main benefit of function. Let's come to the theory. Functions and recursions. A function is a group of statements performing a specific task, whatever task you want to define, or if it is already defined, it will perform that. When a program gets bigger in size and its complexity grows, it gets difficult for a programmer to keep track on which piece of code is doing what exactly. You cannot remember everything separately. So you make a function so that lesser number of variables will be there and you can work on them easily. A function can be reused by the programmer in a given program any number of times.
Example and syntax of a function. See, they have defined a function one and that says print hello. So what this does, whenever we are going to call this function one, it will print hello. This function can be called any number of times anywhere in the program. That's what the point is. It can be called any number of times anywhere in the random most place here, and it will do its job if we are calling the function call. Whenever we want to call a function, we put the name of the function followed by parenthesis as followed. Function one, and this is how we call. Function definition. The part containing the exact set of instructions which are executed during the function call. Okay. Write a program to greet a user with good day using functions. So how you can do it? Just print and good day. Okay. Types of functions in Python. There are two different types of functions. Built-in functions already existing, user-defined functions. See, now what we have done this thing, this thing, this is a user-defined function, and since I told you there might be other functions which are already defined there, so those are built-in functions already present in Python. Examples of built-in functions includes length, print, range. Remember length of that um, any list or any dictionary. Whenever we do length and then inside we keep the variable name, it says how many characters or what is the length of the whole thing. And then print, obviously we're using print everywhere. This is a function too. And range, in the previous class we have learned it. See, just let me show you. See, for I in range from this to this. So range is this. What range used to do is add and move on to the next number till this n plus 1, but generally this will not be considered, the previous one will be considered. So n1 plus minus 1, so n for range 1 to n. Okay. Functions with arguments. A function can accept some value it can work with. We can put these values in the parenthesis. A function can also return value as shown below. See, let's say they have defined a function named greet. So what is the function name? Greet. And inside this they have added a arbitrary which is name. So now they have defined one more variable, gr equals to hello plus greet. Sorry, name. What will be this name? Whatever they are going to enter here. See, so they have defined it here, hello plus this name, and they're returning the gr. Returning means what? A kind of print. Okay, it doesn't mean exactly print, but there is a different. I'll show you in maybe later on classes, not today, but this is the how it work. Now what they have done is a equals to greet and then Harry. What is this greet doing here? Greet is function call, and what is Harry? This is the arbitrary to the name. Okay. A will now contain hello Harry. A can be a function call too. Default parameter value. We can have a value as default argument in a function. If we specify name equals to stranger in the line containing def, this value is used when no argument is passed. See, we are defining a variable with the name of list and name equals to stranger. Let's say we are defining an arbitrary name equals to stranger, and here we are writing something inside the body
and now they are calling the function greet. So see, they have already defined it here, but since inside the function call they didn't mention any arbitrary, so what this thing does in default is it will greet Harry, because this will take Harry as a function body. Because see, oh sorry, greet, if this is empty, this will take default as stranger. This will take, let's say we are writing here, wait, I'll show you an example. Here, if I'm taking name equals to Akshay, okay, and age equals to 10. What I have taken is, sorry, what I have taken here is an arbitrary default value, which we generally say as the default parameter value inside this. Now I can change this whole thing on my own. See, I have written Ayush. It will still print Ayush at this name. It doesn't mean if I have mentioned here, it will going to print that Akshay and 10. No, it will print Ayush and 19. But in this case, let's say we are not mentioning anything. We are just calling the function without any arbitrary. Then let's see what this prints. This prints, see, happy birthday Akshay, you are 10 now. So this is the default value we can set. And whenever the function is called, if no arbitrary is mentioned, then it will call the default values. All right. Now let's move to the recursion part. Okay. Let me clear these things out first. Yes. So now we are going to cover recursion, right? So we'll be covering recursion, and what is recursion? Remember a few minutes back I told you that whenever you are writing something in Python, and especially when you're writing a function, don't add this thing. Wait, uh, let me just don't add this thing inside the function, because if you add this inside the function, this becomes the part of recursion. See, recursion is a very vast topic you can cover, and there are different ways you can learn inside that. But since we are covering the very fundamental and basics, what is a recursion? Recursion is generally that whenever a function calls itself again and again, so that's the main concept of recursion. A function calling itself is called recursion. Okay, let's move out of this and I'll show you an example here. Okay. Yeah, let's take something like recursion. Since we are explaining, we are watching the very basic of recursion. Let me tell you that if we are defining something, let's say I'm defining another variable as a function, let's say print hello. Okay, hello, welcome to Python series. I'm here, and if I simply do what, greet, I'm calling the function, right? This is the function part till now, and this prints hello, welcome back to the number of times you want to.
It will print the number of times, sorry. Hmm. See, the number of times you want to print it, it will print the number of times. But but at the same time, if I want to add the recursion part here, what you can simply do is keep this thing inside this. So now you might be imagining, okay, so you're saying that first we are printing this and then we are calling the function again. This means that we'll be printing this again. But till now, since I haven't called the function yet, let me call it again. So what you might be thinking is, यार ये तो unlimited time, infinity times जाएगा. Let's check. Actually, no. The number of time it goes is there is a limit in Python, which is 1000 till 1000. You can obviously change it with the help of import sys, and you can change that. You can just find any YouTube tutorial online. It will take hardly 1 minute to do that, but you don't need that right now. What I'm going to explain right now is, let's say I've defined something I equals to 0. Okay. Now what I'm doing is I am simply adding this I inside the function. Since this I was global variable. What does global mean? Global means it will apply to the every part of the code. But since this is a defining function, I'll define this global I here, and I want I plus O1. Okay. Now let me print and check. See, I'll show you. Oh, sorry, comma I. Okay. See, I told you right. The limit is 1000, and this is the 99991. This is recursion. Okay. This is the very basic thing where you can see what recursion is. What recursion is? See, we have defined the function, this function, and we are calling the same function inside the function itself. Okay, so that becomes part of the recursion. Okay, and what is the limit? It is 1000. You can obviously change it anytime, but this was the main funda. Let's see what this book says. I mean, the notes says, code with Harry. Recursion is a function which calls itself. It is used to directly use a mathematical formula as function. Example. Yes, there is a question, there is a very famous question you can do on recursion, and you can get this example everywhere. Even we did this in our first sem. See, example is find the factorial of any number. So this function can be defined. There is a factorial formula, right? See, what is, let's say, any factorial of, let's say, factorial 5. What is this? This is 5 into 4 factorial, right? Similarly, what is 4 factorial? 4 factorial is 4 into 4 minus 1 factorial, isn't it? So this is the thing. Let's see how we can implement it inside the code. Let me copy this thing. We have defined a function here, factorial,
and inside this we have placed a arbitrary n. Now see, we are placing, okay, now we are keeping this whole code inside the function. Let me just give a moment. Just give me a second. Let me arrange this and I'll come back. Yes, so I just rewrote the question. I just rewrote the code and I found out that there were some issues in this here. This is not a complete code, so I cannot explain with this reference, but I did write this thing. See, uh, we are defining a function. What is it? Factorial. Okay, the name of the function is factorial, and we are taking an arbitrary n. What is this question? What we want to find is find out any factorial, sorry, find out factorial of any number n. Okay, so we are taking an arbitrary n. Now what we are keeping a condition here is, see, what you can only find the, you can only find out the factorial of positive numbers, or you can say zero also, which is neither positive nor negative, but still you can find the factorial of zero, which is zero. So if n is less than 0, we are keeping a condition here. We have learnt about the conditional statements, right? If, else, elif. So we are writing this. If n is less than or less than 0, then return. What is return? It's a kind of print. Okay. So return factorial not defined for negative numbers. Elif n equals to 0 or n equals to 1, base condition, then return 1. Okay, so the factorial of 0 is 1, right? Yes. Else return n into factorial n minus 1. See, what is factorial here? This is the same function we have recalled. Okay, this is the function and we are recalling the same function till this n is less than or equal, till the n is equals to 0. Okay, so this is what the function calling is. See, the function calling itself, and this is what it's called: recursion. Recursion applied. Now what we are doing is we are naming this inside another variable, this whole function, and it will be calling that directly. See, now I want to change, instead of n, I want to keep a number. Okay, so number will be, let's take 4. Okay, now let's print this out. The factorial of 5 is 24. Sorry, the factorial of 4 is this 24. You can even change this here. It can be any number. You can take an input, let's say n, not n, num.
Mm, let's take it here. Okay, take this itself. What is the 4? And for 12, let's check for 12. The factorial is this number. Okay. So this is the main concept of factorial. This is how we can use. We are recalling the function again. The self function is recalling itself again and again till the whole thing completes out. Like till the n will become less than 0. It will go till that. Okay. This was the main concept of recursion. This is how the factorial works. See, factorial of 5 is 5 into factorial of 4. 5 into 4 into factorial of 3. This is how it continues. The programmer needs to extremely careful while working with recursion to ensure that the function does not infinitely keep calling itself. Recursion is sometimes the most direct way to code an algorithm. Okay. Now we have a few questions. We'll do this. Uh, Give me a minute. I'll be back within 5 minutes. So let's now hop into the questions that we have recently learned from the topic of functions and recursions. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ questions हैं. Um, Let me find a few of them. Right. Python print to print. Mm, okay. Let's do this one first. ठीक है. एक दो functions के कर लेते हैं फिर उसके बाद एक दो हम कर लेते हैं recursions के. So you'll get an understanding. So before just directly hopping into the question and hopping, I'm saying again and again. So just jumping into the question directly and starting coding, we can just understand what the question wants us to solve. Write a Python function. This means we need to define a function which converts inches to centimeter. Okay. So how do we convert inches into centimeters? So um, 1 inch equals to around 2.54 centimeters. So what we'll be doing is simply we will define a function in which we'll multiply the number, like we'll take the user input inch and we'll multiply with the 2.54, so it will become centimeters. Okay, let's just define function. How do we define a function? We are defining this function. Let's let's rename this. Let's name the function as conversion, and here let's take arbitrary inches because we'll be taking the input from the user, so we'll take an arbitrary here. Return what? Inches into 2.54. What is return? It's kind of print function itself, but inside the functions while we are naming it. So now let's take inch equals to input. We are taking an input where we'll take any random number. So what we are saying is enter length in inches. Okay, so we have taken this input. Now print length in centimeters. Simply what we are going to do is write this defined function here.
What do I have defined? What is the name? Conversion and inch. Let's run this. Okay, it's 10. Did I get an error? Okay, so let's enter 12. So length in centimeters is 30.48. We have got this. Let's move to one more question. Let's move to one more question. Um, let's take a question. This one. Write a Python function to print multiplication table of a given number. Okay. So, hmm, see, again, before just directly coding, we'll understand what this question is trying to convey. Write a Python function to print multiplication table of a given number. So, 2 into 1, 2 into, like, let's say we are taking a number 2. Then 2 into 1 is equals to 2. 2 into 2. We need to print this table. This is what table is generally. So let's see how this is going to be. We'll define a function again because we need to call the function there so that it can repeat the set of rules or set of codes we have written in it according to the number we'll input. So diff table. Let's take a arbitrary num. Okay. So what we are going to is we will take for I in range. Why are taking for I in range? Because we need to do it like 1 to 10 times. So we will be taking range from 1 to 11 because 11 will be like 11 won't be counted. It will be counted till 10. So print f why 11 will be not counted. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 and then 11 will be skipped. Then print a number. See, this is arbitrary. We have taken into what? The number we are increasing, right? The range which is of I. See, not into. This is X for writing. So this will be is equals to num into I. That's it. Now we have named completed a function. Simply now what we need to do is call the function and we'll take the input from user. Let's take input that enter a number. Next is we'll be calling the function. So how do we call it? Inside this there is n. Instead of num, it's n. Enter a number 5. Sorry, 5. So 5 into 1 equals 5. 5 into 2. See, we can check. It came till 5 into 10. Now let's do one question on recursion, okay? I hope there is a question there.
in the sheet. Mm, yes, we have one question. Write a recursive function to calculate the sum of first and natural numbers. What is recursion? Recursion is when the function calls itself inside, like inside the function calls itself. That's the recursive function. So let's check here. What we'll do again, we'll define a new function. I'll name this function as sum. Okay, and let's take arbitrary n here. So if n equals to 0, then will return 0. Why I'm saying this, I'll tell you. And next, later on, this return, it will return n plus sum of n minus 1. See why I'm doing this? Because what is recursion? Here we have applied the concept of recursion. We have called the function itself here, but the arbitrary changes because we need to add. See what we have asked, what we have been asked here, right? Recursive function to calculate the sum of first and natural numbers. Okay, first and natural numbers means what this will do is it will take this, and we will take an input n, right? So this n will be, let's say, 10. So then 10 plus n minus 1. What will be this n minus 1? 9 plus 8 plus 7 plus 6 plus till it becomes 0. If n equals to 0, then it will return 0. Otherwise, it will return n plus sum into n minus sum of n minus 1. I'll show you how this is work. N equals to, let's take a input from the user, enter number again, then print what? The print will be sum, let's say sum equals to this function calling of arbitrary n, because we have taken a we have taken the input and the arbitrary same, so this will work as n plus sum of n minus 1. See, 50 is there. What is n? Let's say n is 10. Then what will be the sum of n minus 1? It will be 9. 9 ka sum. So 9, 10 plus 9 plus 8 plus 7 plus 6 plus 5 plus 4. It will go till 0. And if n will become 0, then it will directly return 0. Understood? Let's try this. Let's take 100. Okay. The sum is 5050. You can check it on Google also. I hope the questions were clear. Next, we will be covering file input and output, important in Python, because whenever you write something, a program, what if the contents you are writing are automatically lost? See, the whole thing is dependent upon RAM and ROM, right? So in RAM, this is a temporary memory management. So if while writing all of a sudden you lost your code, what is going to happen? Then you will have a lot of loss. So this is where the file input output works. So automatically, if you're writing some code in any editor or something, let's say, it will save the Python file in there, or else if the electricity goes, if you are onto the PC, or let's say the battery is dead in your laptop, then the whole code will run away, right?
So this is where the file input output works. I'll explain it. Just okay, so hope just practice a few more questions over this thing. Functions and recursions you can get online. The main motive of mine was to cover the basics part of your functions and recursions and explain it with a few examples. That's it. Later on, you can just go deep dive how much you want to. All right. So now let's move to the next topic, which is input and output file systems in Python. So generally, why do we need this? मतलब जैसे मैंने पहले बताया था कि if you're writing something in Python, let's say you have a number of variables there in Python, you have written a code and you have multiple variables there and you have stored some data. देखो जब भी हम वेरिएबल में क्या करते हैं, हम वेरिएबल में डेटा स्टोर करते हैं. वेरिएबल एम्प्टी तो हम बनाते नहीं है ना. वेरिएबल whenever we make, let it be anything with the name variable, we store something inside it. So ये stored जो भी है वो जाएगा कहाँ? अगर let's say you are saying that it will be in the RAM and it will be temporary, तो ऐसे तो अगर हमारा IDE या VS कोड या पाइथन इनपुट मतलब पाइथन फाइल मैनेजमेंट अगर ये क्लोज हो गया, तब इसका मतलब तो ये होगा कि हमारा पूरा डेटा लॉस हो जाएगा, जो हमें ऑब्वियसली नहीं चाहिए. This is where this topic comes and which is useful. In fact, ये ऑटोमेटिक हमारा होता है बैकएंड में, लेकिन मोस्टली में पता नहीं चलता है. लेकिन ये क्वेश्चन ये है कि आखिर ये काम कैसे करता है? हाउ डू वी मेक इट लाइक वो परमानेंट हो कैसे जाता है? क्योंकि अभी जैसे देखो मैं VS कोड में हूँ, मैंने अब a=10 यहाँ पे किया, ठीक है. अब भी ये 10 जो है ये कुछ तो डेटा स्टोर कर रहा है, कुछ तो स्टोरेज ले रहा है. ये स्टोर हो कहाँ रहा है आखिर? क्योंकि ये तो अब जैसे मैं इसको क्लोज कर दूं ना, फिर अगर रीओपन भी करूं तो ये ऑटो सेव होके फिर से रीओपन हो जाता है विद द सेम डेटा एवरीथिंग. वेरी रेयर केसेस जब हमारा लाइक कुछ रेयर मतलब ऐसा होता है ना कि जो फोर्स क्विट हो गया जिसमें सेव ना हो पाया, तो वो बेडली मतलब बहुत कम फ्यू लाइंस का रहता है जो हमारा सेव नहीं हो पाता है. वो बहुत रेयर होता है हमारे में. लेकिन अब जो हो गया है, if you are saving something, let's say now you are saving b equals to 6, yeah, and you are simply closing it. See, now I've closed the VS code. अब मैं फिर से open कर रहा हूँ. You will see that this is saved. See, b is equals to 9. So how does this happen? तो मैं बताता हूँ, देखो. The random access memory, RAM जिसे हम बोलते हैं, is volatile and all its contents are lost once a program terminates. In order to persist the data forever, we use files. ठीक है? A file is data stored in a storage device. A Python program can talk to the file by reading content from it and writing content to it. मतलब हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे फाइल का यूज होता है, फाइल इनपुट एंड आउटपुट, जिस जो हमारा नेम है, फाइल इनपुट एंड आउटपुट. दिस ये मतलब यही कहना चाह रहा है कि हम एक ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हम रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं. ठीक है, देखो. तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये विजुअली जो बताना चाह रहा है कि प्रोग्रामर है एंड प्रोग्रामर जो है वो क्या कर सकता है, राइट भी कर सकता है फाइल में एंड रीड भी कर सकता है. And RAM is volatile, HDD is non-volatile. What is HDD? HDD, SSD आपने सुना होगा. So these are two types of ROM and RAM is different. So RAM, ROM. ROM में कितने अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे HDD हो गया, SSD हो गया. तो let's move to the next one. टाइप ऑफ फाइल्स. फाइल्स कितने टाइप के होता है? एक तो होता है टेक्स्ट फाइल आपका, एक होता है बाइनरी फाइल्स. बाइनरी फाइल्स जैसे देखो, टेक्स्ट फाइल्स तो एक हो गया जैसे आपका
डॉट टी एक्स टी। अब जैसे आप कुछ भी अपने लैपटॉप में जाइए, आप एक नया फाइल कुछ भी क्रिएट करिए, देन दैट विल बी सेव्ड विद द एक्सटेंशन। इसे हम एक्सटेंशन बोलते हैं जनरली। ये एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट टी एक्स टी से सेव होता है, ठीक है। तो वो होते हैं टेक्स्ट फाइल्स। बाइनरी फाइल्स क्या होते हैं, जैसे आपके जो नॉर्मल इमेजेस होते हैं जो आपके किसी फोन वगैरह से ली जाती है, वो पिक्चर्स जो होती है ना, वो जेपीजी फॉर्मेट में होता है। ये डैट क्या होता है, डैट अगर आप आपके मतलब जैसे मम्मी पापा के अरे मैरिज वीडियोस होंगे ना, मैरिज रिकॉर्डिंग, उस समय जो एडिट्स होते थे जो आपके सॉफ्टवेयर में से निकल के आते थे, वो एडिटेड वीडियोस ना डैट फॉर्मेट में होते थे। या फिर आपके रॉ भी जो उस समय के कैमरास लेते थे ना, वो जो लाइक बजट में या थोड़े से प्रीमियम लेवल में कैमरास होते थे, वो डैट फॉर्मेट में निकालते थे। अभी तो MP4 हो गया है, एमओवी हो गया है। तो जैसे आईफोन एमओवी यूज करता है, डॉट एमओवी। आपका एंड्रॉयड वगैरह डॉट MP4 यूज कर सकते हैं। तो वैसे वैसे अलग टाइप्स के बाइनरी फाइल्स होते हैं। तो ये डैट वो था। Python has a lot of functions for reading, updating and deleting files. अब ओपन कैसे कर सकते हो आप, एक एक फाइल है जिसमें आपने सब कुछ डेटा स्टोर कर रखा है, वो तो आपका टेम्परेरी नहीं रहा ना, वो तो आपका हार्ड डिस्क में से हो, मतलब हार्ड स्टोरेज में आपका रोम में हो गया। तो रोम तो मतलब वॉलेटाइल नहीं होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है। सो तो परमानेंट हो गया। सो हाउ डू वी टेक दैट डेटा इनटू द पाइथन, तो वो अब हम देखते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे ओपन फंक्शन यूज होता है। पाइथन हैज एन ओपन फंक्शन फॉर ओपनिंग फाइल्स। इट टेक्स टू पैरामीटर्स, फाइल नेम एंड मोड। अब मोड क्या होता है, मोड इज मतलब रीडिंग मोड है या कौन सा मोड है, ठीक है, रीडिंग या राइटिंग, ठीक है, वो मोड हुआ। तो लेट्स से यहाँ पे हम जैसे कर रहे हैं एक सेकंड। सो जो हमारा ओपन फंक्शन है वो ऐसे यूज होता है, जैसे इसको अगर मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ पहले। सो ये ओपन ये कब यूज होगा, जब हमारे फाइल में अभी हमारे सिस्टम में कुछ ऐसा ना, ये क्या है, ये नेम ऑफ द फाइल है जो हमने सेव कर रखा होगा ना, वो उसका नेम है। तो कुछ भी नेम हो सकता है, जैसे अब मैंने अगर सेव किया हो, लेट मी चेक वंस, इसको मैं पहले क्विट कर लूं, थोड़ी सी जगह मुझे मिल जाए। अब जैसे ना आई गेस यहाँ पे होता नहीं है यार, कैसे होता है इसमें, टेक्स्ट एडिट, ठीक है, टेक्स्ट एडिट में जैसे मैं जाता हूँ, मैंने इसमें न्यू डॉक्यूमेंट बना लिया। मैंने इसमें क्या कर दिया, A = 10 कर दिया, नेम इक्वल्स टू आयुष कर दिया, ठीक है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सेव कर देता हूँ, सेव में कर देता हूँ यहाँ पे। लेट्स टेक इट इनटू, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये अनटिल्टेड डॉट एक्स टी एक्स टी आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ना मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं नाम कर देता हूँ अनटिल्टेड डॉट टी एक्स टी, एंड ये रीड मोड में है हमारा, ठीक है। ये ओपन हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं हम, रीडिंग अ फाइल इन पाइथन। तो ये जो हमारा, इसको हम ना एक वेरिएबल में लेते हैं एफ, एफ इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, टेक्स्ट इक्वल्स टू, इसको रीड अगर हमें करवाना है ना, एक तो हो गया ये ओपन द फाइल इन रीड मोड, ठीक है, ये ओपन कर देगा हमारा इससे। ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा है इससे हमारा ओपन होगा। अब इसको आपको ओपन तो करवा लिया अपने अपने, रीड कैसे करवाना है, तो रीड के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, लेट्स टेक दिस टेक्स्ट इक्वल्स टू
टेक्स्ट इक्वल्स टू एफ डॉट रीड, एफ ये है एंड इसको अब रीड करवाएगा ये, ठीक है। अब इस पे क्या कर सकते हो आप, अब आपका रीड तो आपने कर लिया, अब इसमें जो भी लिखा आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हो तो ये प्रिंट टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रिंट, सॉरी, प्रिंट टेक्स्ट, ठीक है। तो ये आपका प्रिंट करेगा, लेट्स सी आता है, नहीं नहीं कुछ एरर है, आई नो दैट। ये आएगा क्योंकि हमारा जो ये है ना, ये सही तरह से अभी ऑर्गेनाइज है नहीं। तो जनरली अगर हम देखें कि अब जब भी हम इनपुट या आउटपुट लेते हैं, देन दैट शुड बी कंप्लीटली इन द पाथ शुड बी करेक्ट। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। अब सिंपल अभी ये समझो ना, इसका हमारा यूज अभी नहीं आएगा। जो जब हम प्रोजेक्ट्स करते हैं ना, जब हम गिट वगैरह, गिट एंड गिटहब वगैरह में पुश करते हैं, या फिर जो हमारा, जब हमारा बहुत सारा लंबे लंबे कोड्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम फाइल में सेव करके रखते हैं, तब हम उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको क्लोज कर सकते हो, एंड क्लोज के लिए आप ये एफ डॉट क्लोज यूज करोगे। एफ डॉट क्लोज, क्योंकि हमने एफ में ही सब कुछ स्टोर कर रखा था ना ये, तो ये हो गया। ठीक, रीडिंग अ फाइल इन पाइथन, हमारा ये ओपन करता है रीड मोड में, ये रीड करता है कंटेंट को, ये प्रिंट करता है कंटेंट को, एंड ये क्लोज कर देता है। अदर मेथड्स टू रीड द फाइल, वी कैन यूज एफ डॉट रीड लाइन, हाँ ये भी हम यूज कर सकते हैं रीड करने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे एफ डॉट रीड यूज किया था। Similarly, we can use this f dot read line function to read one full line at a time. तो ये क्या करता है, रीड लाइन, ये पूरे एक लाइन को एक साथ में रीड करता है। मोड्स ऑफ ओपनिंग अ फाइल, R for reading, W for writing, A for appending, appending means adding, plus minus for updating, RB will open for read in binary mode, binary modes होते हैं जैसे 0 1 0 0 1 0, मतलब 0 and 1 के कॉम्बिनेशंस में जो होता है। RT will open for read in text mode, ठीक है। राइट फाइल्स, यहाँ पे तो हमने रीड का देख लिया, ओपन का देख लिया, अब आप राइट कैसे कर सकते हो। राइट करने के लिए सेम जैसे यहाँ पे आपने ओपन कर रखा था ना, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। इसमें क्या कर सकते हो आप, सेम आप इसमें राइट कर सकते हो। लेफ्ट डॉट राइट, दिस इज नाइस, अब हमने राइट किया इसमें। अब क्या कर सकते हो आप क्लोज कर दो इसको, क्योंकि आपने राइट कर दिया तो ये अपडेट हो गया होगा, अब ये क्लोज हो जाएगा बस। उसके बाद द बेस्ट वे टू ओपन एंड क्लोज द फाइल ऑटोमेटिकली इज द विथ स्टेटमेंट। विथ स्टेटमेंट में आप क्या कर सकते हो कि दिस ओपन्स द फाइल इन रीड मोड यूजिंग विथ विच ऑटोमेटिकली क्लोजेस द फाइल, मतलब आपको यहाँ पे ना ये एफ डॉट क्लोज नहीं लगाना पड़ेगा, एफ डॉट ओपन नहीं लगाना पड़ेगा, आपको ये ऑटोमेटिक विथ से ओपन हो जाएगा। उसके बाद फिर जो आप करवाना चाहते हो, जैसे टेक्स्ट इक्वल्स टू एफ डॉट रीड है, आपको रीड करवाना, आप रीड करवा लो, आप इसमें राइट करवाना, राइट करवा लो, लेकिन आपको अब ना, जैसे प्रिंट आपने करवाया उसके बाद आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, नहीं यहाँ पे एफ डॉट ओपन करने की जरूरत है, लेकिन हाँ विथ ओपन हमें करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे एफ डॉट क्लोज की जरूरत नहीं पड़ती हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिस शीट है, तो इसमें से कौन सा कर सकते हैं, लेट्स डू फर्स्ट वन इटसेल्फ फॉर नाउ। उसका देखता हूँ मैं, और एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्योंकि देखो these are easy questions, you can do it on your own also, or else you know the sources to solve them। तो हमें क्या दिया है, just a second।
Write a program to read the text from a given file, poems.txt, and find out whether it contains the word twinkle. Okay, so एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट बना रखा था ना, इसको मैं क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ एंड इसमें मैं लिख देता हूँ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स हाउ आई वंडर what you are. I think this is right, but I don't know. I'm just giving an example here. See, let's say this is a pair of 10 lines. Okay. Now the question is that write a program to read the text from the given file poems.txt and find out whether it contains. अब ये क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन आप क्लियरली देख सकते हो. दिस इज ओनली a क्वेश्चन वेयर रीड रीड ऑपरेशन हमारा यूज होगा एंड रीड होगा. राइट की हमारी यहाँ पे कोई नीड नहीं है, बस ये बोल रहा है कि या क्या जो आपका दे रखा है यहाँ पे, लेट्स वी हैव टेकन आवर ओन क्वेश्चन. तो इसमें आपका जो मतलब दे रखा है पैराग्राफ या जो भी स्टैंजाज हैं, उसमें क्या ट्विंकल वर्ड आ रहा है, यूज हो रहा है. तो जस्ट वी नीड टू फाइंड आउट दैट. उससे पहले मैं आपके सेक के लिए ना मैं इसको रीनेम भी कर लेता हूँ यार. यहाँ पे रीनेम होता है. लेट मी रीनेम दिस फर्स्ट. पोएम. क्या नाम था, क्या था क्वेश्चन में? हाँ, पोएम्स. इसकी कोई नीड नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के लिए एक्यूरेट बनाने के लिए आई एम जस्ट डूइंग इट. आई थिंक hmm so let's come here. देखो तो यहाँ पे चेंज हो गया हमारा, ये poems.txt आ गया. अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि अब मैं सबसे पहले तो क्या बोला था मैंने कि आपको ओपन करना है. ठीक है, ओपन आप कैसे करोगे? फाइल को जो ओपन आप करोगे एडिटर में अपने, विथ ओपन. विद ओपन भी आप यूज कर सकते हो. विद ओपन से आपका क्या यूज होता है, लास्ट में ना आपको क्लोज नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली क्लोज होता है. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ओपन क्या करता हूँ, poems डॉट टी रीड. रीड ही करना है अभी हमें. तो एस फाइल. एस फाइल क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फाइल है, इसमें टेक्स्ट जो है, इसमें हमें एक टेक्स्ट हमने लिया है, इसमें फाइल को रीड करवाना है हमें. फाइल क्या था, इसको हमने क्या बोल दिया कि जो आप ओपन कर रहे हो ना, इसको आप फाइल वेरिएबल में मान लो. एंड ये जो टेक्स्ट एक वेरिएबल है, इसको हम रीड करवा रहे हैं जिसमें फाइल है. मतलब फाइल को हमने एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के नाम में डाल दिया एंड हम बोल रहे हैं फाइल को, इस फाइल को रीड करवाना है हमें. ठीक है, अब हमें क्या करना है, चेक करना है. अब हमारा चेक वाला मेन काम आ रहा है. तो इफ वाला आ गया ना, इफ एल्स वाला. तो इफ ट्विंकल इन टेक्स्ट डॉट लोअर. लोअर इसलिए कि बताता हूँ एक सेकंड. प्रिंट द वर्ड. ये बस एक्स्ट्रा काम है, हमारे को ऐसे काम नहीं है इसका, वरना सिर्फ यस या नो पे हो जाता. प्रेजेंट इन द फाइल. ठीक है. एल्स में हम ले लेते हैं प्रिंट द वर्ड twinkle is not present in the file. ठीक है.
बस खत्म। अब इसे हम एक बार रन कर लेते हैं। ये क्या बोल रहा है? एक सेकंड, आई थिंक आई गॉट सम। यार लोअर यूज करना चाहिए था। हम्म। चलो बिना लोअर के एक बार ट्राई करते हैं। ओहो। लेट मी जस्ट गिव मी अ सेकंड। सॉल्व कर लूँ मैं पहले खुद। So yeah, just found out it was a small issue. I didn't add this parenthesis here. I mean, it was completely my fault that I didn't follow the exact syntax. So let me delete these first. Let's run again. See what you're getting. The word twinkle is present in the file. Now let's do one thing. हम क्या करते हैं इसमें से ना, ये वाला, ये ऐसे कर देते हैं, ठीक है? विंकल विंकल, अब क्या आएगा? द वर्ड ट्विंकल इज प्रेजेंट इन द फाइल। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारा ये ट्विंकल तो है ही। अब हम क्या करते हैं, इसको ना कैपिटल मान लेते हैं, इसमें से टी को हटा देते हैं। अब देखो अब क्या आएगा? द वर्ड ट्विंकल इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइल, क्योंकि हमें ना वर्ड ऐसे केस सेंसिटिव होना चाहिए, स्पेसिफिक रहते हैं हम। ये कैपिटल कैपिटल ही होगा, स्मॉल स्मॉल ही होगा, और दोनों डिफरेंट होंगे। तो ठीक है, ये क्वेश्चन एक हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। हम्म। चलो गधों वाला देख लेते हैं, कुछ अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, क्या है ये? चलो देखते हैं क्या कहना क्या है। A file contains a word donkey, ठीक है, multiple times. You need to write a program which replace this word with this hashtag, 4 hashtags by, कितने hashtags हैं? नहीं, 5 hashtags by updating the same file। ठीक है, अच्छा, मतलब हाँ, यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या आ गया कि यहाँ पे आपने देख लिया ये जो दो क्वेश्चन थे कि रीड वाला हमारा था, ये क्या आ गया कि हमें राइट करना, अब हमें चेंजेस करना है इस फाइल में। ठीक है, मैं इसको इसका नेम पोएम ही रहने देता हूँ, लेकिन मैं इसमें क्या कर देता हूँ, कुछ नेम्स डाल देता हूँ, जैसे donkey is not the dumbest animal. It's been years that people have framed donkey as a symbol of stupidity, but instead, donkeys, it brings back human stupidity. I'm just writing random thing here. अब हमें क्या करना है ना, अब हमें फर्स्ट तो सबसे पहला काम क्या रहता है, हम ओपन ही करेंगे ना, फाइल को हम ओपन करते हैं। सो चलिए फाइल को ओपन करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, फिर ओपन पोएम्स, सॉरी, पोएम्स डॉट txt आर।
एक्सटेंड RS फील्ड फाइल, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगेन टेक्स्ट, इसमें वही है जो हमने यहाँ पे किया था ना, इसी को हम रिपीट कर रहे हैं, फाइल डॉट टी। हाँ, यहाँ पे हमें पैरेंथेसिस भूलना नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करना है, अब हमने तो ओपन तो कर लिया, इसको हमने ओपन कर लिया ना। अब हमारे क्या काम है कि हमें इसमें जो भी रिप्लेस करने का काम है वो रिप्लेस हम करते हैं। तो टेक्स्ट को हमने ओपन किया, टेक्स्ट में हम क्या बोल रहे हैं, जो टेक्स्ट डॉट है ना, इसमें हम रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस वाले यूज होता है। रिप्लेस कर रहे हैं किसको, डोंकी को 5 कितने हैशेस हैं, 5 हैशेस हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैशेस से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या कर दिया हमने, रिप्लेस। अब हम क्या बोल रहे हैं कि भाई जो है ना, इसको ओपन करो फिर से। ओपन क्या करना है, ओपन हम करेंगे poems डॉट txt को ही, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आर वाला यूज होता था। मतलब आर वाला किस लिए यूज होता था, रीड करने के लिए। अब डब्ल्यू वाला किस लिए यूज होगा, राइट करने के लिए। तो हम राइट करना है विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू एज फाइल्स, वही है, सेम प्रोसेस है। बस हमें क्या करना है, फाइल डॉट राइट। देखो उस समय रीड था, अब राइट। राइट में क्या होगा, टेक्स्ट, जो हमने टेक्स्ट यहाँ पे सेव किया था, टेक्स्ट इक्वल्स टू रिप्लेस वाला, वो हम टेक्स्ट इसमें डाल देंगे, सिंपल। अब लास्ट चेजेस, प्रिंट, प्रिंट लेट्स से, ये जरूरत नहीं है लेकिन ठीक है, ऑल ऑफ द donkeys have been replaced with the 1 2 3 4 5, ठीक है, खत्म। लेट्स चेक, कोई एरर है, फिर से एरर आ गया हमारे पास। हम्म भाई दिस एरर थिंग इन पाइथन यार, पाइथन छोड़ो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिस एरर थिंग इज लाइक अ बिग मेस अप फॉर एवरी कोडर। अभी मैं भी लर्निंग स्टेज में हूँ, सो इट विल टेक मी टाइम। आपको भी लगेगा, आपसे भी गलतियां हो सकती हैं, मुझसे कुछ ज्यादा होती हैं, लेकिन लेट्स सी इसको आप कैसे डील कर सकते हो। जैसे ही आपको इशू आए ना, सबसे आप पहले क्या करो कि आप इसे पढ़ो, मतलब यहाँ पे कहना क्या जा रहा है, क्या इशू क्या आ रहा है, एरर को पढ़ो। आप एरर को समझना जैसे आपको आ गया ना, तो बहुत आसान हो जाती है चीजें। क्या लिख रखा है कि आपका ये जो है, ये तो ठीक है, विथ ओपन, ओपन क्या है, ओपन कहाँ लिखा है मैंने, हाँ ठीक है, विथ ओपन पोएम्स डॉट txt एस फाइल हमने कर लिया। फिर हमारा क्या ले रखा है कि एरर नो सच फाइल और डायरेक्टरी। अच्छा देखो, टेक्स्ट को ना हमने यहाँ पे गलत लिखा है, ये क्या है, टी एक्स टी है ना, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, टी ई एक्स टी। अब हम रन करके देखते हैं, अब हो जाना चाहिए। छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हो जाती है, थोड़ा सा टाइम लगता है ब्रेन को। अरे फिर से, अ, ये देखो यहाँ पे भी चेंज नहीं किया मैंने। ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, लेट्स कंटिन्यू। अब कुछ नहीं आना चाहिए, हाँ। सो अब देखो, यहाँ पे ना उस समय चेंज नहीं हुई थी। अब क्या बोल रहा है कि जो हमने डोंकी है, ऑल ऑफ द donkeys हैव बीन रिप्लेस्ड विथ ऐसा ऐसा ऐसा। तो अब अगर हम प्रिंट करेंगे, मतलब प्रिंट करेंगे अब हम टेक्स्ट को, ठीक है, लेट्स सी।
ये तो होगा, मतलब ऐसा हो जाएगा कि देखो, ठीक है, एक सेकंड। लाइक प्रोबेबली हमने यहाँ पे सब कुछ कर तो दिया, लेकिन एक सेकंड मैं फिर से क्लियर करता हूँ। आई थिंक सम, अरे यार देखो, यहाँ पे जो हमारा पोएम्स है ना, इसमें अगर मैं ना, हमारा डोंकी क्या है, सभी स्मॉल डोंकीज हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है, कैपिटल डोंकी को रेफरेंस लिया, तो हम स्मॉल डोंकी का करते हैं। अभी देखो, अभी जैसे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, जैसा हमारा पहले हमने सेव किया था ना अपने poems.txt को, ये वैसे के वैसा ही है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि पहले ओपन करो इस फाइल को, एंड इसमें ना इस फाइल को रीड कराओ, रीड में चेक करो, और रिप्लेस हमें करना है डोंकी को इस 5 हैशटैग से। फिर क्या बोल रहा है, जो हमारा poems.txt है, इसमें राइट कर दो, मतलब राइट करके सेव कर दो एस फाइल, और फाइल को ना, मतलब जो प्रिंट करना है हमें, यहाँ पे चेक किया है हमने, ये टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट ये था जो फाइल डॉट रीड था, तो हमने यहाँ पे इसलिए किया। ये बाद में कर सकते हैं हम, पहले इतना जो है ना इस पे काम करते हैं। अब देखो चेंज होता है कुछ, ऑल ऑफ द डोंकीज हैव बीन रिप्लेस्ड विद, देखते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं, चेकते हैं, देखो ये हमारा चेंज हो गया, ये हमारा चेंज हो गया, ये भी हमारा चेंज हो गया, ठीक है। डोंकी, बट इंस्टेड डोंकीज ऐसा था ना, तो ये भी हो गया, तो ये हो गया चेंज। अब अगर हम प्रिंट करना चाहे अपने इसको, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इट्स बीन, देखो, ठीक है, मतलब चेंज हो गया है। ये था हमारा ओवरऑल क्वेश्चन, और बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हो खुद से। तो ऐसे बस हमने जितना देखा है कि ये कोड लिखना बहुत इजी था, लेकिन कहीं कहीं पे एरर्स आ रहे थे, जैसे कैपिटल डी स्मॉल डी पैरेंथेसिस का छूटना, ये सब चीजें रहती है। तो अब हम क्या करने, मेन जो हमारा अब आ रहा है ना, पाइथन की जो, मतलब क्या बोलूं मैं, हर किसी भी मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये आपका हर जगह पूछा जाएगा, मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट, ओवररेटेड, अंडररेटेड, सब कुछ यही है, ठीक है, पूरे पाइथन में, तो जिसे हम बोलते हैं ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। हम देखते हैं ऊप्स को।